हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल से नो टू दर्द। आज हमारे पास एक सज्जन आए हैं जिन्हें शोल्डर में प्रॉब्लम है। नेचर ऑफ जॉब इनका सिटिंग है, 12 घंटे इन्होंने लैपटॉप पे काम करते हैं। जानते हैं इनके मुंह से कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है और ये मेरे पास किस लिए आए हैं। Hi, I'm Alok. I'm from Delhi. I have come here with soreness in my shoulder as well as pain. Whenever I move or lift my shoulder, there is a crack sound with the pain. With current pandemic situation, I have been working from home for 10 to 12 hours on every daily basis, and we do not have a proper office environment, office sitting environment. This has triggered a bit more. टेबल चेयर्स हैं Yes, वो correct. जो ऑफिस में हुआ होती हैं वो घर में हमने लिए एनसी ले लेते हैं। इवन प्रॉपर ऑफिस में मैंने अपने लिए बैक रेस्ट एज वेल एज लैपटॉप लिफ्टर लगाया हुआ है सो दैट आई कैन कीप माय लैपटॉप एट अ प्रॉपर हाइट सो मेरी नेक एंड शोल्डर प्रॉपर उस पर है। यस, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में घर पे सारी चीजें हमें मिल जाती अवेलेबल हैं। नहीं कभी हो हम सुबह पाएंगे। बैठते हैं, कभी Yes. हम बेड पे बैठ के काम कर लेते हैं। इवन कभी हम लेट के काम कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट Yes, पोजीशन सो वो different आई थिंक positions. उसने ज्यादा ट्रिगर कर दिया ये सारी चीजें। या लॉकडाउन हैज कॉज्ड पोस्चरल चेंजेस। Yes. ये जो 3 महीने 4 महीने का जो टाइम है, इसमें ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों के जो पोस्चर्स हैं ना वो हार्म्ड हो चुके हैं और स्लाउच हो रहे हैं लोग। तो आप भी आपका पहले असेसमेंट करते हैं Yep. और फिर आगे आपका जो शोल्डर का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं। As you can see, the level of the shoes is not equal. What that suggests is there is some malalignment in the body. It could be the spine, it could be the sacrum, or it could be the knee, or maybe there is some problem in the ankle itself. So it's an excellent way of checking out the things where the leg length discrepancy tells us about the dysfunction in the spine or dysfunction anywhere else in the body. ये एक मशीन है मेरे पास जिसको हम नर्वोस्कोप के नाम से बोलते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन है, ये छोटे छोटे जो टेम्परेचर डिफरेंसेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर उनको जज कर लेती है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरफ स्पाइन में मैल अलाइनमेंट है, कौन से लेवल पे मैल अलाइनमेंट है और कितना बड़ा मैल अलाइनमेंट है। बेसिकली जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ये जो नीडल है उतना ही ज़्यादा राइट में या लेफ़्ट में चली जाएगी। तो मेरे को पता चल जाएगा कि ज़्यादा नीडल जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डिसफंक्शन ज़्यादा है और लेवल भी मुझे पता चल जाएगा। तो यही मैं अभी आपकी बॉडी पे लगाऊंगा और ऊपर से नीचे तक इसको फेरूंगा और चेक करूंगा कि कहाँ कहाँ पे मैल अलाइनमेंट्स हमें मिलते हैं। हालांकि आप मेरे पास शोल्डर प्रॉब्लम के पास साथ आए हैं, लेकिन जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमने पूरी स्पाइन एडजस्ट करनी होती है। तो हम पूरी स्पाइन में जहाँ जहाँ फॉल्ट मिलेगा, हो सकता है आपको पहले बैक पेन रहा हो या हो सकता है आपको मिडिल बैक में कुछ स्टिफनेस रही हो। तो हालांकि वो मेजर कंप्लेंट नहीं है आपकी मेजर कंप्लेंट तो शोल्डर में आ रही है, लेकिन हम जब वो करेंगे, चेक करेंगे, जहाँ जहाँ हमें डिसफंक्शन मिलेगा हमने सारे ही करेक्ट करने होते हैं। मुझे सबसे पहले आपका जो अपर स्पाइन है वहाँ पे अपर सर्वाइकल स्पाइन वहाँ पे डिसफंक्शन मिलता है, मैंने मार्क लगाया है। मिडिल स्पाइन आपकी फिर मुझे डिसफंक्शन दिखा रही है। यहाँ पे मुझे अगेन बहुत एक्सट्रीम एक डिसफंक्शन मिलता है। ये C7T1 बीच में आपकी स्पाइन अभी यहाँ पे ठीक बता रही है। यहाँ पे मुझे फिर डिसफंक्शन मिलता है, लेकिन हल्का डिसफंक्शन है। यहाँ पे मुझे थोड़ा डिसफंक्शन मिल रहा है। जब हम लंबर स्पाइन में आ गए अगेन मुझे डिसफंक्शन मिलता है।
ये मैं सैक्रम पे आ गया हूँ। मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक डिस्फंक्शन मिलता है। मेक श्योर आपकी स्किन जो है नीचे रेक्सिन के केस में नाइस। Nice. Oh, nice. Now I'll be adjusting your upper cervical spine. What I'll be using is the activator for your upper cervical spine. It's a chiropractic thrust gun. With this, I need to choose the intensity. You'll feel a thrust sort of a thing. Keep breathing, no problem. This is the C2 I am adjusting for you now. Yeah, you keep breathing. Relax. Solid. कुछ दिन पहले लिगामेंट का आज तक अच्छा लगा है। खुल गया आपका एंकल। Good. Yeah. थोड़ा सा bend it. Nice. बस पीछे खींच लो।
Relax. पहले से करेक्टेड है मामला. As you can see, now this time the level of the shoes is nearly corrected. There is still some leg length discrepancy, but more or less it's corrected. Let's take the feedback from the patient also. How does it feel? Alok, how are you feeling after the chiropractic adjustment and alignment? How are you feeling now? I'm How do feeling you much better. Okay. Since I installed this room. So it's quite relaxed now. My whole back, from cervical till spine. So I'm feeling much better now. You feel you have more mobility now? Yes. You have more movement? Yes. The body is free? Yes, pretty much. And what else? How would you like to put it? I think for me, the issues I have in my back, I should be visiting you for sure to get this corrected, and that's the correct decision I have taken, I believe. Thank you. Thank you. Thanks, viewers, for watching.